You know, I am your host Hore and you are watching my channel. I am Bhabaghure. I am blogging for the people, places, food and festival. This is the food part here. I am totally enjoying it. I mean it. Really I mean it. इतना सुंदर ये जो एरोमा है ना, इतना ब्यूटीफुल है. ओह, क्या बताऊं. ये जो ना, we used to prepare traditional alcohol here. अच्छा अच्छा. This is mud pot. ओह Mud अच्छा. pot जो मड से बना है. अच्छा. तो ये जो पुराना जमाना में यही से चलाया जाता था. खाना इसमें पकाता है, अपुंग इसमें बनाता है. अच्छा. अपुंग इसमें जो बनाने से ज़रा टेस्ट होता है. टेस्ट होता है. और हमेशा थोड़ा ठंडा में रहता है. आपका निशी में अपुंग को क्या बोलते हैं? पुच्ची बोलता है. हैं? देकम पुच्ची. देकम पुच्ची. मतलब ये मिलेट से बनता है ना? ये मट्टी से बनाना. देकम मीन्स मट्टी. देकम जो लाल वाला मट्टी. आप लोग जो छोटा छोटा दही के लिए यूज नहीं करता है, उस टाइप का ये है. दिस वन इज पुडिंग. और ये जो अभी जो को हम पता है, इसको हम लोग ट्रेडिशनली यूज करते हैं. ये इजीली पत्ता भी नहीं है. ये जो मिलेट को इसको हम लोग ये बना के भी दूध कैसे भी खा सकता है. और ये मिलेट चटनी भी बना के. तो ये मिलेट जो इसको कैसे बनाता है, हम लोग पकाता है. पकाने के बाद थोड़ा ठंडा होने लगे उसमें येस्ट ऐड करता है. येस्ट मालूम है ना? येस्ट ऐड करके उसको वो टिकिया होता है, वो मार्केट में मिला कर लगा देता है. जूम कल्टीवेशन. उसके बाद हम लोग इसको फर्मेंटेशन करता है. फर्मेंटेशन हम लोग 15 दिन महीना ऐसे होने के बाद इसको बना के. क्या डाल रहे हैं आप? This is the local drinks. The Arunachali, you can get it here all over Arunachal Pradesh. They are the local drinks here. At around 26 tribes are here in Arunachal Pradesh, and they have the own drinks. And this is called, your language, what does it called? Oppo. It is called here Oppo, but all over Arunachal you will find it here in the name of Apang. And you can, I can't tell you what a beautiful aroma is coming from here. Oh, what a beautiful aroma. And you can see it is pouring here. And it is a traditional Nyishi tribe house here in Talo Village, and you can see just and it is the pork roasting here. हेलो, मुझे दो. So it is pork roasting here. Just you can see. And that is the local drinks. That is called Apung, Appo. And it is the pork roasting here.
So I am here at Talo Valley, na? It is called Talo Village, and I am here at Arunachal Pradesh. You may know I am blogging for the people, places, food and festival. I am here. It is my 5th time here at Arunachal Pradesh, and this is my first time here at Talo Village in their people Nyishi tribe. No, you are the Nyishi tribe people, and they have the beautiful people. I have met it here, the beautiful people, and they are 50 years Nyokum festival they are celebrating, and it is one I am showing. That is the traditional Nyishi tribe kitchen. They are the just pork is roasting there, and you can see that is the oppo is dripping there in drop by drop. And this is my today's host. Just please, sister, your name? Emin. Emin. And you have also met with my 2 little kids. Already you have met, and you can see traditional home in the village of Nyishi tribe. Traditional Nyishi tribe village. In every houses there you will find this kind of just meat. Here is the very much cold here, and they have just preserve their meats like this way, and it is the pork meat just it is roasting. And it is making the drinks. They are indigenous tribe. The hot water is pouring there, and it is at around 1 month ना 1 महीना हो गया ना ये जो आपने प्रोसेस किया है 1 महीना हो गया. This is made from millet ना, millet से बनता है. Oga? Nga ije chupati ko pala. Lak bica niya alpa de. Saya tipi basta siya mo tinta ko din. Nyokum का प्रोडक्ट था फेस वॉश का है पूरा दो Nyokum का अगर तुम मेरा क्या हुआ तुम ले सकते हैं तुम धुल नहीं सकता है क्या दल बाहर में दिखाई दे रहे अब देखो किस तरह से कर ठीक आ रहा है ना. सुंदर ये जो एरोमा है ना, इसका जो स्मेल जो है कितना ब्यूटीफुल है. ओह आहा क्या बताऊं. थैंक यू मैम.
कैसे बताओ ना, कैसे कैसे ये बनता है? पहले तो ये जो मिलेट है, आप खेत से उगाते हो ना मिलेट, मरवा? इसको ना हाँ। आगे ये मट्टी को दाव से काटते हैं ना, बगल काटने का बाद घास गिराता है। अच्छा। घास गिराने का बाद आग लगाता है, लगाने का बाद डेरा बनता है ना, डेरा बनाने का बाद परवा पकड़ के सफा करता है ना, उसका बाद उसको डालता है। डालने का बाद फिर सफा करता है, निकालने का बाद ना, उसका बाद ये परवा निकलता है ना, उसको चाकू लेके काटता है। चाकू लेके काटने का बाद ये पकता है, पकने का बाद ये कढ़ाई में अच्छा से भाजी करके पानी डालते हैं। इसमें कोई दवाई डालते हैं? दवाई डालते हैं। अच्छा। दवाई ना फिर कितना दिन रहना पड़ता है इसको? तो 2-3 महीना होने 2-3 महीना। अच्छा। फिर अभी गर्म पानी डाल रहे हो, अभी तो इसमें जो निकलेगा वही होगा अपो। Hi friends, I am here at Arunachal Pradesh, this is Talo Valley, and we have just experienced some local foods here. You will getting me? So local foods, this is the roasted pork meat, and you have also seen the appo, this called appo na? And this is roasted pork meat here. What a beautiful experience it is. I can't tell you. You know, I am your host Hore, and you are watching my channel. Bhabaghure. I am vlogging for the people, places, food and festival. This is the food part here. I am totally enjoying it. I mean it. Really, I mean it. That's it. हो गया। Okay.